नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज हम चारों एक बार फिर क्रिकेट की बात करने के लिए जुड़े हुए हैं और क्रिकेट की बात जो होगी वो इंग्लैंड के भारत के टूर पर होगी। भारत की जो टीम है वो अनाउंस कर दी गई है, जो टी20 स्क्वाड है वो, और वो टी20 स्क्वाड जो सीरीज स्टार्ट होने वाली 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। और आज हम इस कॉल के अंदर इंडियन स्क्वाड और इंग्लैंड के स्क्वाड को बारी बारी एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसा ये बैलेंस है और किस तरह से कौन सी टीम कहाँ पर स्ट्रांग लगती है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर दी इंडियन टीम हियर। राइट, सो लेवी, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? Thank you, sir. Rahul, sir, thank you for inviting me for your show. Great to be here with team members. थैंक यू। Um, मैंने जब ये पहली बार देखा ये स्क्वाड, तो मुझे तो पहला जो फीलिंग आया वो था, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड टीम that they have selected with Suryakumar Yadav as a captain, very flamboyant, very very prolific batsman in T20 format, full of confidence and dashing batsman. तो and a very inspiring captain as well. तो मुझे अच्छा लगा उसका। उनका जो डेप्यूटी है वाइस कैप्टन, आई थिंक ही आल्सो इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। आपने उनके जो T20 वर्ल्ड कप में उसका परफॉर्मेंस देखा तो इट वाज वेरी रिमार्केबल एज वेल। His fielding, his batting, and especially his bowling as well. So in all three formats, he has been a outstanding performer, and it's a worthy vice captain. Abhi, we have not seen him as a captain, but I look forward to it if he's given the opportunity. In case Suryakumar Yadav is not available for whatever reason, then he will step in. तो वो काफी अच्छा है. Sanju Samson, with his performance and as a wicketkeeper, that has been a great selection. Then we've got Abhishek Sharma. I think in the tour of Zimbabwe, he has performed really well. और जो उनके जो साथ में उनके जो ओपनर हैं वो है हमारे तिलक वर्मा, आई संजू बिलीव, सैमसन। संजू Sanju सैमसन, Samson, and then अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, ये दो ओपन करेंगे। exactly. And then you got Tilak Verma also. So, IPL, he has performed well there and he has proved his mettle. इन्होंने ये अच्छा नीतीश कुमार रेड्डी को लिया हुआ है because his performance in test match where he has seen his technique and is very promising all rounder that they have taken to especially in the lower middle order to make it more robust there. It gives up some stability there as well. Or then you've got Ravi Bishnoi is a good spinner. वो भी लिया उनको लिया और to complement him we got Varun Chakravarti as well. And then we've got to complement Nitish Kumar Reddy. We got a good batsman coming up. Just before him is Rinku Singh. Hardik Pandya is obviously a well-known performer. I'm not too sure about his fitness level. That's a question mark. And you've got Washington Sundar as the off spinner as well. Or then you've got Dhruv Jurel as he's a great batsman and great wicket keeper, test wicket keeper. So no questions there. And you've got the whole chain of fast bowlers: Arshdeep Singh, Mohammad Shami. He is making a comeback. That's a big plus for India. Hopefully his fitness remains and he is able to perform without any further injury. Harshit Rana is also, we've seen him in Australia, good promising upcoming cricketer. Hope he does well. तो मुझे लग रहा है कि all in all कि it is a very balanced side and I think they have got all the ingredients of doing really well in this tour. So we'll see how it Right. goes. Yeah. एब्सोल्युटली। अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करूं तो मुझे भी ओवरऑल में टीम के कॉम्बिनेशन पे बात करूं तो मुझे सिर्फ एक प्लेयर यहाँ पे मिस लगता है। ये 15 लोगों का स्क्वाड है तो हो सकता है 16 लोगों का स्क्वाड भी बना सकते थे। शिवम दुबे मुझे इसके अंदर एक मिसिंग टीम मेंबर लगता है। अगर वो होता तो स्क्वाड और अच्छा होता, एक ऑप्शन मिल जाता है कैप्टन को, कोच को किसी न किसी सिचुएशन में यूज करने के लिए। बट नेवरदलेस वो नहीं है तो भी ये स्क्वाड बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने भी कही, मोहम्मद शमी का कमबैक।
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मिस किया। तो अगर वो यहाँ पर मैच फिटनेस उनको मिलती है और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये आने वाले इंग्लैंड टूर के लिए जो हम लोग जाएंगे 6 महीने बाद उसमें बड़ा एक प्लस पॉइंट रहेगा। अदरवाइज ऑल गुड, वंडरफुल स्क्वाड, वेरी बैलेंस स्क्वाड। सिद्धार्थ। थैंक यू राहुल भाई, सबसे पहले धन्यवाद आपको, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। देखिए, ओवरऑल बैलेंस स्क्वाड है, जैसे साउथ अफ्रीका में था वैसा ही है लगभग, बारिंग फ्यू चेंजेस। मोहम्मद शामी ह्यूज प्लस। I think they want to test out his fitness before the Champions Trophy, ठीक है। दूसरा, ध्रुव जुरैल को मौका दिया जा रहा है जो कि अच्छी चीज है, ठीक है। ओवरऑल आई थिंक honestly, I think in place of Harshit Rana, I would have tried, is it Anshul Kamboj, जो अपना हरियाणा का फास्ट बॉलर है, who got 10 wickets, पीछे भी एक रणजी के में जो 3 बारी हुआ है, because वो actually up and coming fast bowler. I would have tried him as well, but again it's a touch and go thing between Harshit Rana and Anshul Kamboj. That's one thing. And दूसरा क्या है, वो अगर अपना ये जो चाइना मैन है, अपना स्पिनर कुलदीप, उसकी फिटनेस का अगर क्वेश्चन मार्क है, अगर उसकी और मोस्ट लाइकली उसका रिप्लेसमेंट शायद वरुण चक्रवर्ती हो, तो ये चक्रवर्ती की फॉर्म भी टेस्ट आउट करेंगे कि इन 5 गेम में वो कैसा खेलता है। maybe he might find himself a spot in those 3 ODIs against New Zealand, England as well. But honestly, I think it's a good, very very good स्क्वाड। जैसे पिछले जो हमारा कॉल हुआ था, अनूप भाई बोल रहे थे कि हमें 13-14 साल लग गए रियलाइज करने में कि भाई T20 का फॉर्मेट चेंज हो गया है। फाइनली दिस स्क्वाड इज रिफ्लेक्टिंग, थिंकिंग कि भैया हम एटलीस्ट फाइनली इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड विद न्यू नेम्स, विद fully aggressive approach, keep back down नहीं करना, we keep going at it. So I think I'm very happy with it. अनूप। पहले तो शुक्रिया राहुल, wonderful once again being part of the show and working with you and Levi and Siddharth, great team, good fun to always talk about cricket. I think Levi और Sid ने इस टीम के बैलेंस, और आपने भी कहा, and I think they have spoken a lot about that. I think I would probably add a few points here which might be like adding to the discussion. So maybe we will have a chat about this in the call, but is squad, it's a very balanced squad. There is absolutely no doubt that it is more tuned. आजकल की जो T20 की रिक्वायरमेंट है और काफी स्क्वाड में कंसिस्टेंसी भी है, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन सीरीज। इस स्क्वाड में मैं 2-3 चीज बताना चाहूंगा। we talk about the players who actually are missing, right? So one of them is Natarajan, जिन्होंने ऑलमोस्ट 2 साल से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी फिटनेस प्रॉब्लम बिकॉज he's been playing regularly for the local IPL team as well as the I think he's representing Tamil Nadu as well in local leagues. Definitely what is the status of Natarajan? Why is he not getting a part of the squad? Harshit Rana has been picked and it seems to be a continuation from the test squad. But भुवनेश्वर कुमार again, right? In terms of अगर आप IPL performance देखोगे तो उनका बहुत ही अच्छा है. Why is he missing out in the squad is a big question to ask. आपने already बताया about Shivam Dubey, right? So he's another miss. Another player that I would want to ask about is what happens to somebody like the leg spinner Chahal, right? So Yuzvendra Chahal, right? Chahal has been one of the most top performers in almost every IPL season, right? Almost 17 to 18 wickets. चहल का अनूप ये था वो उनके पर्सनल फैमिली रीजन की वजह से अवेलेबल नहीं है। और अनूप वो हरियाणा के लिए भी नहीं खेल रहे हैं विजय हजारे में. He also has not played for Haryana as well. Okay, so that's good to know. So at least one person we have an answer. But there are some questions to be asked in terms of why are some of these players missing. But other than that, it's a very balanced squad in terms of the personnel selected. If I had to make a call, I would have got Natarajan in the squad because unka Yorkers are very very good.
he would have complemented Arshdeep. So मैं ये squad को देखूंगा राहुल, तो look at the backups that they have picked up, right? So अगर आप logically देखोगे तो Nitish Kumar Reddy is the backup for Hardik Pandya, right? Ravi Bishnoi is the backup for Varun Chakravarti. Washington Sundar is the backup for अगर आप इधर पे देखोगे तो Axar Patel, correct? And obviously you have each of these backups done. इसमें सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए ध्रुव जुलर है, नॉट बिकॉज कि वो अच्छे विकेट कीपर नहीं है या अच्छे प्लेयर नहीं है. अगर आप इस स्क्वाड के कंपोजिशन में देखोगे तो रियलिस्टिकली योर ओपनर्स आर अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन, राइट? एंड अगर संजू सैमसन इज नॉट प्लेइंग, तो हु इज योर ओपनर? आर यू देन गोइंग टू प्रमोट समवन लाइक तिलक वर्मा इनटू ओपनिंग? बिकॉज ध्रुव जुलर इज नॉट एन ओपनर. उन्होंने ओपन नहीं किया है, वो ओपनिंग नहीं करते हैं एटलीस्ट आईपीएल के स्क्वाड्स में. तो सडनली यू फाइंड ध्रुव जुलर को अगर आपको फिट करना है तो यू माइट हैव टू टेक आउट वन ऑफ द मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स टू फिट हिम इन, और एल्स यू हैव टू पुट हिम इनटू अ वेरी अनकन्वेंशनल ओपनिंग पोजीशन. या तो आपको कोई ऐसा प्लेयर को प्रमोट करना पड़ेगा ओपनिंग जो नॉर्मली ओपनिंग नहीं करते. तो जो अगर करने स्क्वाड में किया है, द गुड पार्ट इज द सेलेक्टर्स हैव एक्चुअली पुट अ बैकअप फॉर एवरी पोजीशन. तो इसमें ऑड मैन आउट मुझे ध्रुव जुलर लगते हैं, बिकॉज ध्रुव जुलर डज नॉट फिट इनटू दैट मिडिल ऑर्डर स्लॉट व्हेन यू ऑलरेडी हैव बैकअप फॉर मिडिल ऑर्डर. अगर अपॉर्चुनिटी है तो आई वुड हैव डेफिनेटली पिक KL Rahul in the squad, because KL Rahul offers you the wicket keeping option, as well as he's a good floater, right? He's opened at test level, he opens for his Lucknow Super Giants, so obviously उनके पास opening experience है. तो अगर आप मुझे पूछोगे तो adding to whatever Sid and Levy have said, I would say if you look at some of those balances, it would have just opened up a bit more opportunity for trying out players. Right. But the squad is on the right pathway. There is absolutely no doubt that this is a very balanced squad, and I think they are on the right track. Right. Yes, Levy, आप कुछ कह रहे थे? Okay, no, fine. So let's quickly move towards the England squad. इसके ऊपर भी हम लोग quickly overall team wise बात कर लेते हैं, individual बात ना करने के बजाय. Maybe Levy, would you like to start? I'll prefer going the other way. Maybe Anup can take this. Okay, fine. Anup, let's start. Yes. Okay, maybe you can. I can do that, mate. Not a problem at all. So, firstly, the good part here is Joe Root, right? Rather than look at the old squad, I'll probably pick out some players which are great picks, right? So, Joe Root has shown absolute amazing form in all formats. He's really transformed himself into a T20 player. उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निक है तो यू कैन इजीली प्ले. आई मीन केन विलियमसन इज अनदर एग्जांपल, राइट, हु कैन प्ले प्रीटी गुड T20 एज वेल. जो रूट इज अ ग्रेट सिलेक्शन. हैरी ब्रूक, टू सी हिम बैक इन द स्क्वाड एंड प्लेइंग, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट पिक. अनदर गेस्ट, आप जैसे like Levy and said about Mohammad Shami, I think it is wonderful to see Jofra Archer in the squad, because I think Archer is a great choice right here. We all know the talent of Phil Salt. Obviously अगर इस स्क्वाड में मैं देखूं तो my worry remains उनका स्पिन का काबिलियत, right? So Adil Rashid is a very good bowler, but obviously they have, I think Saqib Mahmood also does bowl spin from my quick remembrance. Adil Rashid is a good bowler, but that is the only aspect I can see as a challenge, that where are the England spinners being groomed for a future tournament in the Asian subcontinent, right? अगर आपके अगले सारे tournaments is going to be away, is fine, but those are the only aspects I would say. Other than that, this is a very balanced squad, and I think they have got all bases covered. It's good to see they have not pulled up the test captain from oblivion and asked him to come and play, because वो sadly he's becoming like Shahid Afridi. बीच में वो कह देते हैं कि हम आएंगे correct types. So I'm happy to see that the test captain is not playing here, and all in all it's a very balanced squad. And England have been very good in T20 squads, but mind you, they've had a very poor ODI World Cup. They didn't have a great T20 World Cup either, which means that it's going to be a very big test for Joss Butler and the new coach who's come from the test squad, right? So Brendan McCullum takes over the squad for the first time. So we'll get to know whether England का जो टेस्ट का अप्रोच है वही अप्रोच आपको T20 में भी दिखता है क्या, because this T20 approach that was there in the previous two squads was very very poor. So right, absolutely. और I think जॉस बटलर जो है वो इंग्लैंड टीम को पिछले कई सालों से बड़े अच्छे से लीड करते आ रहे हैं, और जो एक इंग्लैंड ने फियरलेस क्रिकेट खेलना जो स्टार्ट किया है उसमें इनका भी एक बहुत बड़ा
रोल रहा है? जोफ्रा आर्चर का कि sorry to cut you there, Rahul. Apologies. The reason is Josh Butler hasn't been doing a great job as a captain. Unka ODI World Cup performance was very poor. right. England's performance in T20 World Cup was poor. So Josh Butler is under tremendous pressure as a captain because उनका batting भी इतना कुछ हुआ नहीं है as a captain in the last few series, or neither has the squad performed to the potential that you expect out of the England squad, which has actually revolutionized Test cricket. That's one of the reasons you also see the coach being Brendan McCullum, because they want to have that kind of like commonality between the Test and the limited over squads. और ब्रेंडन मैकलन में काफी इंटरव्यू में कहा है कि उनको जॉस बटलर को फ्री करना है, इन द सेंस ही वांट्स टू फ्री हिज माइंड. ही जस्ट फील्स दैट प्रोबब्ली इज अ लिटिल स्टक एग्जैक्टली उनको कैसे खेलना है इस वाले फॉर्मेट में. So I am keenly watching this series in the sense from England's perspective as well, because it's going to be a make or break series for Josh Butler, and it will be interesting to see how he performs. Right. और जोफ्रा आर्चर के अलावा एक और प्लेयर जिस पर मेरी नजर रहेगी वो हैरी ब्रूक. हैरी ब्रूक जो है वो आईपीएल में भी बड़े अच्छे से सोल्ड आउट हुए, और मेरे ख्याल से इनको मुंबई इंडियन ने लिया था, ये पहले बेंगलोर में थे. तो ये एक ऐसे प्लेयर थे जब मुंबई ने पिक करने के बाद में मुंबई की टीम का जो अनंत अंबानी थे वो उठ के बेंगलोर की टेबल पर गए और उनसे हैंडशेक किया कि आपने इन्हें जाने दिया. सो ये एक है. तो उसके बाद सिद्धार्थ, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इंग्लैंड स्क्वाड? देखिए जो रूट को जो इन्होंने पिक किया है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अगले साल जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका में है T20 का. जो रूट इज अ गुड स्पिन प्लेयर, ठीक है, तो उधर उसको एक बेस को कवर करना चाहते हैं, ठीक है. वो ओवरऑल आई थिंक नए चेहरे हैं, ठीक है, काफी सारे अनटेस्टेड प्लेयर हैं एट दिस मोमेंट इन सब कॉन्टिनेंट पोजीशन, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट पिचेस. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे बिहेव. जैसे जेकब हो गया या ब्रेंडन हो गया या साकिब हो गए, ठीक है, दे आर द newbies here. So I think overall they are testing out few things as well as us. The other thing I want to, मेरे दिमाग से बात निकल जाए, जैसे अनुप भाई ने बोला ना कि केएल राहुल का, यार मुझे पता क्या लग रहा है, आई थिंक वी आर डन विद केएल राहुल. हम टेस्ट कर चुके हैं उनको. प्रॉब्लम इज उनको 2020 का वर्ल्ड कप दिया, 2021 का वर्ल्ड कप दिया, फिर उनका वो जो माइंडसेट प्रॉब्लम आ जाता है. ही इज अ prolific hitter. I don't know why he slowed down. ठीक है. So I honestly think yes, I agree, we are probably an opener shot in this one, but being a अपनी country में game हो रहा है, अगर कोई injured होता है तो within 12 hours they can replace that person. But I think with KL Rahul, I honestly think yeah, let's move on. At least 31, 32, guy hasn't done anything, maybe we try new people. That's the I'll only just add thing. one thing to what Sid said. I think the biggest problem for KL Rahul is the fact that I would strongly recommend not giving him leadership roles. अगर आप closely notice करोगे Sid and team, तो जब भी उनके पास वो leadership role होता है, right, where he is told that he is supposed to lead the team, उनका खेलने का तरीका ही change हो जाता है. Maybe he is one of those guys who tends to take overall responsibility on his head and tends to slow down. So मैंने ये आईपीएल में भी काफी बार नोटिस किया कि जब भी उनको वो कैप्टनसी का रोल दिया जाता है तो उनका वो खेलने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है. मे बी इट इज हिज नेचर दैट ही लाइक्स टू टेक ऑन दैट एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी. उसके वजह से शायद ही इज नॉट एबल टू फ्री हिज माइंड, बिकॉज जब वो आरसीबी के लिए खेलते थे, जब विराट कोहली कैप्टन थे, या लाइक ही वाजंट इन दैट लीडरशिप काइंड ऑफ रोल, उनका खेलने का तरीका बहुत ही डिफरेंट था. दैट इज व्हाई ही वाज पिक्ड इन द 2021 and 2022 स्क्वाड्स, राइट, बिकॉज उनका खेलने का तरीका अलग था. बट द मोमेंट यू पुट हिम इनटू दैट सॉर्ट ऑफ अ लीडरशिप रोल इज वेयर आई हैव सीन इट अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल. And the same thing happened in Lucknow Super Giants last year as well, right? When he was at that prime position, somehow I think his game tends to change. Maybe that is a thing that he has to have a look at, or maybe the selectors have to have a look at. But this is just a feeling I get from a outsider perspective. Right. Okay. Anup, your take on England squad? We spoke about the England squad. No, sorry, the Levy. No, thank you. Just want to finish off that conversation about KL Rahul. Yes, absolutely. Yeah, just a quick comment on that. I think him not being included in the team speaks volumes, that they have actually moved on from there. And also, they're looking, again, creating what we had discussed earlier, creating a specialized team. So they have placed their bet on
the newcomers, the new faces, the new generation of coming in. And if you look at these two teams, Indian, if you look at just because, and the way I would like to pick is Indian team is I mean they've got Jofra Archer coming in. You've got Josh Butler. You've got Joe Root. They're like the Adil Rashid. They are the, like you can say, the older kind of people where India's moved away from that. So I would say the English team is a lot more matured team, right? A much older and much more mature team, where Indians have put their emphasis on the new breed of coming of next generation coming in and taking on the burden. So it's a two different philosophies, and I think India has bet on its youth, while England has bet strongly on the veterans to perform in English conditions. So I think it's going to be a very interesting, and they've got a good mixture of the young squad as well. Gus Atkins, Phil Salt, Brydon, Carse, Mahmood, obviously he's a good bowler. Livingstone. So I think they've got a good, and Jacob Bethell. They've got a very good combination of the old and new, and I think it's a good combination to have. Only thing, like I mentioned, is Josh Butler. He had a terrible T20 World Cup. Also, his the ODI World Cup wasn't great. So I agree with that he's under a lot of pressure to perform. Or I don't know if it's Anup Ji who said that. I'm not. My apologies. My apologies for that. He's right that it is Josh Butler is under tremendous pressure to perform and win a home series, right? And I think he'll have a good support from Joe Root, who's an informed batsman. He'll take a lot of and Jofra Archer, as you know, that he's a great bowler, but he's been on the receiving end of a lot of injuries. So let's hope that he has a good tournament. He's fit more than anything else from a good tournament from a fitness perspective. And apart from that, they've got good Mark Wood and the bowling. They've got Adil Rashid as well, so as a good veteran spin bowler. So I think it's a very good squad as well. I think it'll be a very, very fantastic series, and I'm looking forward to it actually. Right. So Rahul, one other important point, right? In that squad, yes, if you really look at it, you're getting two bowlers who have just come back from injury, right? So Jofra Archer and Mark Wood both have come back from injuries. Jofra Archer from long time injury, and that means you have actually gotten two bowlers who probably have got very less experience in that sense coming back from injury, which means you're going to put a lot of pressure on Overton and others. When you suddenly, let us say that for some reason Mark Wood and Jofra Archer have some problems, or let us say they don't reach up to the potential because they've just come back from injury, you're looking at an England squad that will be already depleted. Another player just to look out for is a very good future prospect is Jamie Smith. Jamie Smith essentially was picked, replacing, the current Test wicketkeeper. I'm not able to quickly recollect his name. And essentially, Jamie Smith was. Is it Bairstow? Johnny Bairstow, correct. So right, in Test cricket, Johnny Bairstow was replaced to pick Jamie Smith, and Jamie Smith was particularly picked because Jamie Smith can play the attacking game very, very well. So watch out for Jamie Smith, other than Harry Brook, obviously. So these two are it's a very unique scenario. So I think you got to watch out for Jamie Smith as well. He's also very good against spinners. He charges the bowler very good in hitting big sixes. राइट और आई थिंक जैसे इंडियन टीम ने ये सोचा कि मोहम्मद शमी को एक गेम मतलब एक सीरीज दी जाए ताकि वो मैच फिटनेस अपना टेस्ट करे, उसी तरीके से शायद इंग्लैंड भी ये सोच रहे हो कि जोफ्रा आर्चर को भी एक मैच फिटनेस के लिए सीरीज दी जाए ताकि जब वो टेस्ट मैचेस में इंडिया वहां जाएगी तो फिर वो उस लेवल पे जो उनसे एक्सपेक्टेशन है उस लेवल का परफॉर्म कर सके। मैं एग्री करता हूं उसको, एंड दैट इज व्हाट उनको क्या पता, आई थिंक दे हैव गिवन द Mohammad Shami like a good opportunity to show his match fitness. At the same time, it's going to be a sharp spell of 4 overs. Just go for it and just perform. And there'll be a very good small feature set where he can, in a controlled fashion, show his performance. So, and that's a good way of testing him out before the Champions Trophy.
राइट। जी ये सिद्धार्थ, मैं आप कुछ बोल रहे थे, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ हाँ, चलेंगे यूजर के। yeah, one final quick 10 seconds. Yeah, I'm so happy that Gill is not picked up in this squad. Yeah, I think Gill, अगर इंडिया को अपना टेस्ट स्क्वाड इंप्रूव करना ना, गिल मस्ट वर्क ऑन हिज डिफेंस एंड फोकस ऑन टेस्ट एंड ओडीआईज, लीव T20 फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। हमारे पास पावर हिटर्स बहुत हैं, लीव इट टू देम, ठीक है। गिल के पास जो टैलेंट है that can be better utilized somewhere else. राइट, ओके। सो हम लोग अरुण जी के कुछ कमेंट्स है उस पर चलते हैं। सो अरुण जी सबसे पहले नमस्ते करें सबको। नमस्ते अरुण जी। और फिर उसके बाद में वो ये कह रहे हैं कि ओके, परफेक्ट इंडियन स्क्वाड। थैंक यू अरुण जी। हम लोगों ने भी यही बात करी कि ये एक बड़ा बैलेंस से एक अच्छा स्क्वाड है। तो हमेशा क्या होता है कि कुछ नाम हमेशा ही मिसिंग रहते हैं जिनके ऊपर हमेशा बातचीत होती है। सो बट ओवरऑल एक लिमिटेशन होती है 15-16 मेंबर्स का स्क्वाड बनाने की। सो जो भी बेस्ट 15-16 सिलेक्टर्स को लगते हैं वो लोग पिक करते हैं। उसके बाद एक और लास्ट कमेंट है, फिर इसके बाद हम लोग एंड कर सकते हैं इसको। अरुण जी कह रहे हैं जो रूट विल बी दी गेम चेंजर फॉर इंग्लैंड, वेरी हैंडी विद द बॉल। हाँ अरुण जी बिल्कुल बराबर। वो उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस बॉल के साथ में टेस्ट मैचेस में तो बहुत शो करी है। जब लास्ट 2 बार इंग्लैंड जब भारत आई थी उस समय उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया था। सो उन्होंने टेस्ट मैचेस में तो शो करी है। लेट्स सी उनकी बॉलिंग T20 में कितनी इम्पोर्टेंट होती है, टाइम विल टेल। एनीवन एल्स वांट टू शेयर और कंट्रीब्यूट समथिंग ऑन दिस? अदरवाइज not yes. just Joe Root is definitely, I think it's a good pick. I have always believed कि आपको youth के साथ experience की always जरूरत पड़ेगी. I think he's a good player, so Joe Root being in the England T20 squad is a good pick, and I think that is a lot to do with Brendon McCullum, because Brendon McCullum knows to pick the right set of players, and Joe Root will be a good addition. There is only one thing that I want to add: an interesting choice of vice captaincy from India. Axar right. Patel, right? And now I think it's a thought to be had. Axar hasn't captained in the sense even for his local IPL team. Now I'm specifically saying IPL because obviously for the T20 squad it is the biggest tournament to pick from, right? So it's a very surprising choice क्योंकि आपके पास स्क्वाड में हार्दिक पांड्या हैं जो मुंबई इंडियंस को कैप्टन करते हैं और जिनके कैप्टनसी के अंदर इंडिया हैड परफॉर्म वेरी वेल, राइट? सो इट वाज नॉट कि हार्दिक की कैप्टनसी के अंदर हमने ठीक से काम नहीं किया, तो हार्दिक is a senior player as well. So it's a very unique scenario. Plus, like if you're looking to groom someone for the future, is Axar Patel your identified vice captain? Meaning, like in the event of Suryakumar Yadav not being available, are you grooming him for a long term to be your captain? So it is a question for the selectors to actually share the pathway. जैसे हमने last show में बात किया था, right? It's very important that you identify your vice captains because Suryakumar Yadav cannot be the captain forever, right? Because he might get injured, he might not play a couple of games. So आपको एक structure identify करना पड़ेगा. I do not know if it's a long-term plan or is it just a short-term, because the time Bumrah is back, so it's quite possible that Surya will be the captain and Bumrah might be the vice captain. So are you looking at that as the continuity or is it just for the series? The selectors have to just identify and be a little very specific कि उनको squad को लेके कहाँ जाना है. That is the only aspect, nothing to do with whether Axar Patel is a good captain or not a good captain, but it is more to know whether is he the identified future prospect for captaincy material. So that's a big question to answer. Absolutely. I think ये क्वेश्चन का आंसर अगर सिलेक्टर उनके टीम सिलेक्शन अनाउंस करने के साथ में भी वो अगर शेयर करके बताते कि वो किस थॉट प्रोसेस के साथ में उन्होंने हार्दिक पांड्या की जगह अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया तो और भी ज्यादा अच्छा होता, तो शायद ये आंसर और उनकी तरफ से मिल जाते. सॉरी, ये एक्चुअली ना कभी होगा नहीं राहुल. Exactly. I think in the history of whatever we have seen, I have never seen like proper explanation of any sort of selection and why somebody has missed out. ये आपको काफी बाहर के स्क्वाड्स में होता है. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखो तो जॉर्ज बेली हैज एक्चुअली सेड व्हाई नेथन मैक्सवेनी वाज ड्रॉप, व्हाई ही इज पिक्ड अप, व्हाई अ सर्टेन प्लेयर हैज नॉट बीन पिक्ड, and questions are asked, but that is not the way I have seen things work in right. our side of the world, I say, not just our India, right? I don't see any other team coming and explaining the rationale for selection. आप जो कह रहे हो वो perfect है, rationale for selection has to be explained, but I don't think
that's going to be something that is there. राइट, एब्सोल्युटली. सो आज आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद. बड़ा ही एक क्विक टाइम नोटिस पे आप सब लोग अवेलेबल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए. और एक अच्छा एनालिसिस हम लोगों ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किया. और अरुण जी आपका भी धन्यवाद, आपने क्वेश्चंस पूछे, हमने आई होप हम लोगों ने आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आंसर किए होंगे. सो आज के कॉल को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम पे अनाउंस होंगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे, और भी फर्दर कुछ और दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे. सो आज के इस कॉल के लिए, आपके सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे. थैंक यू.